Once again, we will continue that mechanism of enzyme action. Okay, so we can see enzymes are needed only in a small quantities of for the progress of reaction. तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिंदी में समझना है तो फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, भाई हिंदी में समझाओ। ओके, द Similar to the reaction of chemical catalyst, enzymes are said to reduce the magnitude of activation energy. You want Hindi? Okay. For example, activation energy for acid hydrolysis of sucrose is 6. नेक्स्ट है इसमें vitamins, right? So now it has been observed that certain organic compounds are required in small amounts in our diet, but their deficiency causes a specific diseases. Okay, these compounds are called vitamins, right? Most of the vitamins cannot be synthesized in our body, right? But plants can synthesize almost all of them. So they are considered as essential food factors, right? However, the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us, right? All the vitamins are generally available in our diet. Different vitamins belong to various chemical classes, and it is difficult to define them on the basis of structure, right? They are generally regarded as organic compounds required in the diet or in a small amount of perform amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of ऑप्टिमम ग्रोथ। ओके, मैं आप लोग को कुछ कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करें कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। विटामिन्स आर डिजाइनेटेड बाय अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में है क्या क्या? विटामिन ए, बी, सी, डी, etc. ओके, some of them are further named as subgroups, that B1, B2, B3, B2, B6, B12, etc. Excess of vitamin is also harmful, and vitamin pills should not be taken without the advice of doctors. Okay, right. Next one. The term vitamin was coined from the word vital plus amine, since the earlier identified compounds had amino groups, right? Later work showed the most of them did not contain amino groups. Okay, so the letter E was dropped and the term vitamin is used these days, right? समझ में आया? Okay, so next we will see vitamins are, next है classification of vitamins। इसी में so vitamins are classified into two groups depending upon their solubility in water and fat, right? The first one is fat soluble vitamins, vitamins which are soluble in fat and oils, right? But insoluble in water are kept in this group। सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? ओके, दीज आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये क्या है? फैट एंड ऑयल सोल्यूबल, राइट?
which are soluble in fat but insoluble in water. Okay, next है they are stored in liver and adipose means fat storing tissues, right? Water soluble vitamins, B group vitamins and vitamin C are soluble in water, so they are grouped together. Water soluble vitamins must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored, okay, except vitamin B12, यानी B12 स्टोर होता है, right, in our body. Some important vitamins, their sources and disease caused by their deficiency are listed in below. Right? So now we can see विटामिन ए सोर्स में सारा है और इसको डिफिशियंसी में क्या बोलते हैं, जेरो फैथलमानिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, हार्डनिंग, जिसको अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को दिखाई नहीं देगी. विटामिन B1 थायमाइन, ओके, ईस्ट मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स सीरियल्स इस समय मिलता है, ठीक है. अगर इसकी कमी हो जाएगी तो लॉस ऑफ एपेटाइट, रिगार्डेड ग्रोथ नहीं होगा बॉडी की, ठीक है. वेरी B2, ओके, राइबोफ्लाविन बोलते हैं, मिल्क एग वाइट लिवर किडनी, ये उसमें इसका सोर्स है और इसकी वजह से होता है ये केलोसिस, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड लिप्स, इसे ये बीमारी हो जाती है, यह एक डिसऑर्डर भी हो सकता है. सो नेक्स्ट वी कैन सी विटामिन B6, ओके, पेरिडॉक्सिन, ईस्ट मिल्क एग योग सेटल्स इस समय पाया जाता है और इसकी वजह से, ओके, कॉन्वल्यूशन करके एक बीमारी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट है विटामिन सी, B12, मीट फिश एग एंड कॉड में, पर्सिनियस एनीमिया, आरबीसी डिफिशियंसी इन हेमोग्लोबिन हो जाएगा. विटामिन B6 एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको. साइट्रस फूड, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्कर्वी, ब्लीडिंग जम्स, ये सब बीमारी होती हैं. विटामिन ई सब आपको अच्छे से आता है, राइट. आई होप आपको समझ में आ गया. और कुछ और है, आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट जॉम्स ऑयल, ओके, सनफ्लावर ऑयल, ये इसके सोर्स हैं और इसकी वजह से बीमारी होती है. ओके, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, इसकी वजह से इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, ठीक है. मतलब अगर ये कमी हो जाएगी तो ये ब्लड क्लोटिंग टाइम नहीं होगी. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी न्यूक्लिक एसिड. ओके, आगे बढ़ते हैं.